Hello students, I welcome you all on the online study platform of Sri Academy. Dear students, today I will discuss the second part of the second chapter, and that is about Bismillah Khan's story. And the second chapter is The Sound of Music. It has two parts. In the first part, we have discussed already about Evelyn's story, her love of music, and the second part is about Bismillah Khan's love for his Sahnai. And here, this is the title of the second part, the Sahnai of Bismillah Khan. So Sahnai is the instrument, this is the instrument, and he is Bismillah Khan. So Sahnai is the instrument which is played by Bismillah Khan, and he is one of the great player of Sahnai, and for that he won the most renowned awards in all over the world, and he is also the Bharat Ratna of India. He got Bharat Ratna for his Sahnai playing. And come to the chapter. So before reading this chapter, you have to perform some tasks. So do you know these peoples and what instrument do they play? Here is some pictures, and you have to tell that who is the player and what is the instrument. So in the very first picture, it is Hari Prasad Chaurasia, and this instrument is called Banshuri, flute in English. This instrument is called flute. And in the very next picture, it is the image of Vilayat Khan, who is playing sitar. This is called sitar. Sitar in English also. Here are two women playing the instrument that is called violin. It is violin, and her names are Dr. Lalitha and M. Nandini. So, and they are known as the violin sisters. They both are the sisters, and they are known as violin sisters. And in the fourth image, the instrument is called tabla, and the person sitting behind it is Dr. Zakir Hussain Khan. He is Zakir Hussain. He is the one of the best player of tabla of his period. And in the next image, that is of Veena. The instrument is Veena, and the person who is playing it is Ashad Ali Khan. And students, see, this picture is very confusing because the instrument the person is playing is not shown. That's why I'm not telling you which instrument is this, because in picture it is not clear. If you know, mention it. And in the next picture, it is Amjad Khan Bangash. He is playing sarod, and this instrument is very much resembling this instrument, the sarod, resembles sitar, and he is अमजद अली खां बंगस. ये बिल्कुल सितार की तरह दिखता है, लेकिन इसका नाम सरोद है, और इसको ये प्ले करते हैं. और इन द लास्ट इमेज, दिस इज द सहनाई. यू ऑल आर very well known about it, and this is the Bismillah Khan who is playing, who has the great mastery for Sahnai. Come to the lines, come to the next point. Think of the Sahnai, and the first thing you will probably imagine means think about Sahnai. अगर आपको सहनाई के बारे में आप सोचते हो तो क्या आपके दिमाग में आता है? Is a wedding or a similar occasion or function. डायरेक्ट आता है ना कि सहनाई प्लेइंग हो रही है, मीन्स it resembles, it makes us to think that it is the occasion of marriage ceremony, or the occasion like that, or the functions like that. And the next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro. Maestro is the Italian word, and this is used for the master. So maestro means master. So Bismillah Khan is the master of Sahnai playing. Come to the lines. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. Emperor Aurangzeb, King Aurangzeb, he was a Mughal emperor, and he had banned
the musical instrument. He had banned the playing of musical instrument in his court called pungi. Pungi is an instrument which you will see in another picture. पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप आगे के पिक्चर्स में देखोगे। और औरंगजेब जो कि मुग़ल एम्परर था, उसने उसके पुंगी के प्लेइंग को बंद करा दिया था अपने कोर्ट में। वाई? बिकॉज he said that pungi has shrill and unpleasant sound. Unpleasant means it's not good sound. And pungi became the generic name for reeded noisemakers. Generic name means a name given to class or group as a whole. Reeded means wind instrument which have reeds like the flute, the clarinet, etc. So in these lines, pungi became the generic name for reeded noisemaker. Means जो लोग पुंगी को बजाते थे उन सारे लोगों को भी पुंगी नाम से जाना जाता था. The group, the people who is playing pungi or pungi kind of instrument. Pungi kind of instrument means here given it that reeded. Reeded meaning means the instrument which is playing with the help of wind, like flute. Flute is also playing with the help of wind. Sehnai, pungi on that period. So, and all that pungi players are, all that kind of instrument player are known as pungi. Few had thought that it would one day be revived. कुछ ही लोगों ने सोचा होगा, रिवाइव्ड मीन्स फिर से इसको नया रूप देना. कुछ ही लोगों ने ये सोचा होगा कि ये पुंगी जो जिस पे बैन लग चुका है वो एक दिन रिवाइव भी किया जाएगा, उसको एक नए रूप में भी लाया जाएगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. एक बार्बर, एक नाई जो कि जिसकी पूरी फैमिली ही म्यूजिशियंस की फैमिली है. म्यूजिशियंस की फैमिली का एक बार्बर मीन्स जो संगीत का घराना है उसमें कोई बार्बर जो काम करता है. Who had access of the royal palace decided to improve the tonal hollow stem and was longer and broader than the pungi. उसने और वो नाई है उसका एक्सेस है रॉयल कोर्ट में भी. वो डिसाइड करता है कि जो ये पुंगी का लॉन्ग टोनल है, जो ये लंबी इसका जो शेप है उसमें वो इंस्ट्रूमेंट करेगा, उसमें वो चेंज करेगा, उसमें वो उसको रिवाइव करेगा, उसको न्यू फॉर्म में ले आएगा. सो ही चूज अ पाइप विद द नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. और इसके लिए क्या किया उसने, पुंगी को एक नया रूप देने के लिए उसने क्या किया, एक लंबा पाइप लिया जो हॉलो था, बीच से खोखला था और उसमें और देखने में भी लॉन्गर स्ट्रॉन्गर था, बिल्कुल पुंगी की तरह. उसमें क्या किया, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप. और उसमें छोटे छोटे 7 होल्स कर दिए पाइप, उस जो हॉलो पाइप था उसकी बॉडी पर. ही हैज़ मेक द होल मीन्स ही हैज़ created 7 holes on that pipe that is like pungi, and start playing the newly formed instrument. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उसने क्या किया, उसी जो पाइप लिया था लंबा, उस पे जो 7 होल्स बनाए थे उसी पे किसी पे फिंगर रख करके किसी फिंगर हटा करके इसे प्ले करना स्टार्ट किया. तो उससे दैट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट साउंड, अ वेरी प्लीजेंट साउंड. एंड देन ही start playing that instrument in the royal court. And for his playing of that new instrument, he get very applause for that, and the royal person all are impressed with that instrument. So see, here is the picture of pungi. This is pungi, this is old form of sehnai, and this is the newly created instrument sehnai. Here it is a whole means a pipe only, long pipe which has 7 holes. And this pungi have a different kind of shape. It was famous in ancient time, and its revive formed. Okay, so this is different between sehnai and pungi.
and the sound of come to the next. The instrument so different from pungi had to be given a new name. और जो ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से जो डिफरेंट था उसको एक न्यू नेम दिया गया. To be given a new name as the story goes. और इसके नेम के बारे में जो स्टोरी है, what is that story? Since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai barber, the instrument was named the Sahnai. और इस सहनाई के नामकरण के पीछे what is the story? It was played in the chamber of Shah. Shah means king. In Urdu it is called Shah. So in the very first time this instrument was played in the court of Shah. That's why, and the player is a nai, a barber. So by taking both words close, that becomes Sahnai. This is the story about how Sahnai was given its name. And come to the second point. So the sound of सहनाई बिगन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. और इस सहनाई का जो साउंड है वो पवित्र साउंड माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन एन indispensable component of any part of the Naubat are traditional ensembles of 9 instruments found at royal courts. So auspicious means promising to bring good fortune, means it's पवित्र मौका, कोई अच्छा good situation, good occasion, beautiful occasion. Indispensable means without which a piece of work cannot be done. मीन्स सहनाई बाद में क्या हो गया, बहुत पवित्र साउंड इसका माना जाने लगा. विदाउट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग इन टेम्पल्स, इन इट वाज used for playing it during the worships, during the marriages, during other auspicious occasions, and it becomes the inseparable part of that occasions. And till now Sahnai is a very indispensable part of Indian marriage. Whenever you takes thought of marriage, there you must think that Sahnai is the mandatory. So it is become the indispensable part of Indian marriages, temples and other auspicious occasions. So, and in the past the Sahnai was the part of Naubat or tradition. Naubat means 9. Naubat is a Urdu word. Naubat is a Urdu word and its meaning is the 9 jewels, where in the court of kings they keep 9 extraordinary things, and in them what they are called in Urdu, they are called Naubat, and Sahnai is one of them. So till recently it was used only in temple and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. अभी तक ये क्या था, before Bismillah Khan it was only the thing which is played in the court of kings, in the temples and in marriages. But for it making more profoundly, more frequently, means more close to the people, its credit goes to बिस्मिल्लाह खां. बिस्मिल्लाह खान ने ही इस इंस्ट्रूमेंट को सब लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय बनाया. Come to the third point. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji's temple to sing the Bhojpuri Chaita at the end of a prize given by a local Maharaja, the Chaita, and in the end a prize given by the local Maharaja. And what is the prize? It's laddu of 1.25 kg weight. And this happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian awards in India, the Bharat Ratna. और जब बिस्मिल्लाह खां
when he was a boy of 5 year old, he used to play gilli danda, and I think you people are very much aware about the gilli danda sport, gilli danda game, and which is frequently means played by the village boys. So Bismillah Khan also was one of them who used to play gilli danda during her childhood. And from where he belongs? He belongs from Dumrao state, and Dumrao state is in the part. Dumrao state is the part of modern Bihar, and he used to play gilli danda and used to sing chaita. Chaita is a folklore in Bhojpuri. It is used to sing by a group of people, and this is based on some local stories. So it is chaita which is sing in Bhojpuri. So he used to play gilli danda in her childhood and used to sing chaita in Bihari Ji's temple. एंड द लोकल किंग जो और वहाँ के स्थानीय राजा थे वो उनको क्या प्राइज़ में देते थे 1.25 kg का लड्डू पर डे उनको यही मिलता था. एंड फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम दैट लड्डू टू विनिंग द भारत रत्न आफ्टर 80 years old, what he got? He win भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. और तो हम एंड लेट अस कम टू द स्टोरी हाउ द पर्सन इवाइव्ड, how the person develop his capacities, develop his versatile and his mastery in playing Sehnai. So he was born on 21 March 1960. Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. Bismillah was born on 21 March 1960 and he belongs from a well-known family of musicians. Means उनके परिवार वाले भी musicians हैं and they belong from Bihar. His grandfather Rasool Bux Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. And what was the name of his grandfather? Rasool Bux Khan, and he was also Sehnai Nawaz, means the great master of Sehnai in the court of Bhojpur Kings. And his father Pagambar Bux and other paternal ancestors were also great Sehnai player. और उनके पिता पैगम्बर बक्स और उनके पिता के पूर्वज और भी बहुत सारे उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग बहुत ग्रेट सहनाई प्लेयर हुआ करते थे. The young boy took a music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. Soon Bismillah started accomplishing his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the Sehnai. एंड जब वो छोटे ही थे तो उनकी मदर ने उन्हें उनके मैटरनल अंकल उनके मामा के यहाँ लेती गई. और वेयर इज मैटरनल अंकल लीव्स इन बनारस and now Varanasi is her old name was Benaras. It is used to pronounce as Benaras. So Bismillah Bismillah started living with her maternal uncle, and and his maternal uncle was a great Sehnai player in Vishnu temple. He was employed there to play Sehnai, and his maternal uncle's name is Ali Bux. And with his maternal uncle, Bismillah also used to go to temples and he watched playing Sehnai and other instruments also. And after that, he started getting lessons in the playing of the instrument and would sit practicing throughout the day. और उन्होंने भी धीरे धीरे इसके लेसन्स इसको सीखना शुरू किया और एक पूरे दिन भर उन्होंने भी अपने अंकल्स और खुद से प्रैक्टिस करना शुरू किया सहनाई बजाने के लिए. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और विष्णु टेम्पल के अलावा बालाजी टेम्पल, मंगला मैया के टेम्पल और गंगा जी के घाट्स, इन सब में भी जो यंग अप्रेंटिस मीन्स द यंग लर्नर, यंग प्रैक्टिसनर,
So he start, these are his favorite places: Mangala Maiya's temple, Balaji's temple, and the banks of Ganga. These are where his favorite places where he used to practice in solitude. Solitude means अकेले में. इन सारे places पे वो अकेले में प्रैक्टिस करना उन्हें बहुत पसंद था. एंड द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्स हिम टू इम्प्रूव एंड इवेंट राग्स. और जो गंगा का के वाटर का जो कलकल जो साउंड है वो हमेशा उनको इंस्पायर करता था उनके म्यूज़िक को इम्प्रूव करने के लिए और रागों को इन्वेंट करने के लिए. that were earlier considered to be beyond the rags of सहनाई. और ये उस समय की बात है जब सहनाई रागों के बिना थी, मीन्स सहनाई में राग नहीं थे. And at the age, come to the 6th point, at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference, and at the end of his recital, Ustad Fayez Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sehnai player on radio. So at the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मैटरनल अंकल अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए. और वेयर एट द एंड ऑफ, और वहाँ उन्होंने अपने सहनाई प्लेइंग को दिखाया, अपना सहनाई प्ले किया. और उस्ताद फैयज़ खान, ही वॉज ऑल्सो ग्रेट म्यूजिशियन, ही हैज़ पैटेड बिस्मिल्लाह's बैक एंड सेड, उन्होंने क्या कहा, उनके बैक को पैट कर थपथपाते हुए पीठ को क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो इस पे और तुम इसे एक नया रूप दोगे. यू शैल मेक इट, तुम इसको एक नया अंदाज दोगे, एक नया राग दोगे. एंड और ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन को ओपन होने के बाद इन 1938 में बिस्मिल्लाह वाज in his career of Bismillah, it is a big break, it's a new point, it's a turning point when he was the frequent player of Sehnai in All India Radio studio. Come to the 7th point. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई 15 अगस्त 1947 को, उस समय बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट पर्सन हु ग्रीट द नेशन, जिन्होंने अपने देश का, अपने जो स्वतंत्र होता देश था उसका अभिवादन किया अपने सहनाई प्लेइंग से. और ये कहाँ सहनाई प्लेइंग किया, ये रेड फोर्ट में किया. और उनके गेस्ट्स में कौन थे, उनको सुनने वाले लोगों में कौन थे, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू. और ये सहनाई प्लेइंग का कार्यक्रम होने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही फेमस स्पीच है, दैट इज़ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, मीन्स अपने भाग्य से मिलना, अपने भाग्य से मिलन, इस नाम से जानी जाती है जवाहरलाल नेहरू की स्पीच, फर्स्ट स्पीच विच ही डिलीवर्ड फ्रॉम द फोर्ट ऑफ लाल किला on the night of 15 August. And come to the 8th point. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first, Bismillah Khan ने इस तरह बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया है इंडिया में भी और उससे बाहर भी. And this point is missed in the 7th point. And which rag Bismillah played on the day of independence? It was Kafi rag. There are rags in instrument playing also, so it is Kafi rag. In the next 8th point, his first trip abroad was to Afghanistan. और उनकी किसी विदेश की पहली ट्रिप बिस्मिल्लाह खां की कहाँ थी, अफगानिस्तान, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. Sovereigns means things given in memory of a place, person or event. So
sovereigns he given, means the and the very first his the first concert abroad was in Afghanistan, and the king of Afghanistan, who is Jahir Shah, he has he was very much pleased by listening the Sahnai of Bismillah Khan, and he gave बिस्मिल्लाह खां ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कार्पेट्स, पर्सियन जो कार्पेट बहुमूल्य पर्सियन कार्पेट्स उन्हें गिफ्ट किए, और बहुत सारे उसको बहुत सारे और भी गिफ्ट्स दिए जो कि उस प्लेस की मेमोरी के रूप में रह जाए बिस्मिल्लाह खां के पास. And the king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. और केवल किंग ज़हीर ही नहीं थे बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक के को प्यार करने वाले, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival and that named a film. बल्कि फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो इतने इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को सुनने के बाद कि उन्होंने अपनी एक फिल्म गूंज उठी शहनाई, अपनी एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई ही रख दिया. एंड द फिल्म वाज अ बिग हिट, और वो जो फिल्म थी वो बहुत बड़ी हिट हुई. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster means record breaker. सो इनका जो बिस्मिल्लाह खान ने जो एक कंपोजिशन किया, जो म्यूज़िक शहनाई का कंपोजिशन किया, दिल का खिलौना है टूट गया, इस सॉन्ग पे जो अपना कंपोजिशन किया म्यूज़िक का, वो इंडिया में सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला था. वो एक नया रिकॉर्ड सेटअप करने वाला था, वो इतना फेमस हुआ. डिस्पाइट his huge success in the celluloid world means old fashioned way of referring to films. Bismillah Khan's venture in film music were limited to two. अपना इतनी ज़्यादा सक्सेस पाने के बाद भी बिस्मिल्लाह ने केवल दो, बॉलीवुड में केवल दो ही म्यूज़िक किए, वो दो तक अपने आप को लिमिटेड रखे. फर्स्ट इज़ विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एंड सेकेंड इज़ विक्रम श्रीनिवासन्स कन्नड़ वेंचर संधि अपन्ना. सो गूंज उठी शहनाई एंड संधि अपन्ना, दीज आर द टू बॉलीवुड फिल्म्स वेयर बिस्मिल्लाह खान हैज़ performed. And I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. और बिस्मिल्लाह खां बहुत जोर दे करके कहते हैं कि मैं जो फिल्म वर्ल्ड का, जो फिल्मी दुनिया का जो ग्लैमर है, जो आर्टिफिशियलिटी है वहाँ की, जो कृत्रिम मीन्स जहाँ नेचुरलिटी नहीं है, उसमें बहुत ही ग्लैमर ऐड करते हैं, बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देते हैं कि वो नेचुरल शहनाई नहीं रह जाती. एंड बिकॉज ऑफ दिस he don't want to work again in Bollywood. Come to the ninth point. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. और इसी तरह बहुत सारे अवार्ड्स और पहचानों को पाते हुए बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन बने जिनको कि लिंकन सेंटर हॉल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है उसमें बुलाया गया. ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर. और इसी तरह वो ओसाका ट्रेड फेयर एंड मॉन्ट्रियल के केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी बुलाए गए, इन्वाइट किए गए. So well known did he became internationally, and then an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosik उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और उसके बाद ईरान की कैपिटल है तेहरान, उसमें उन बिस्मिल्लाह खां के नाम से ही एक ऑडिटोरियम बना दिया गया. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऑडिटोरियम? तहर मसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. Come to the 10th point. National awards like Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan were conferred on him.
और ये सारे अवार्ड उन्हें दिए गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री एंड इवन भारत रत्न. So these are the most high civilian award of India. And in come to the 11th point, in 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, that is Bharat Ratna. So after winning Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, he won Bharat Ratna, which is the highest civilian award of India. In which on when he got Bharat Ratna, so in 2001. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और ये अवार्ड पाते हुए एक उनके चेहरे पे बहुत चमक थी, बहुत खुशी थी, जो कि बहुत कम दिखाई देती थी. और उन्होंने क्या कहा कि टीच योर चिल्ड्रंस म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, म्यूज़िक पढ़ाइए, क्योंकि भारत म्यूज़िक ट्रेडिशन में बहुत ही रिच है, बहुत धनी है. और वेस्ट मीन्स पश्चिमी दुनिया, यूरोपियन वर्ल्ड इज़ आल्सो कमिंग to learn our music. 12th point, in spite of having traveled all over the world, Khan Saab, his pet name is Khan Saab, he is also known as Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns in the world. लेकिन पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करने के बाद, वर्ल्ड टूर करने के बाद भी, हर जगह बहुत प्रसिद्धि पाने के बाद भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जो कि खान साहब के नाम से भी जाने जाते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय बनारस और डुमराव था. जहाँ उनका बचपन बीता, बनारस जहाँ की वो चाइल्डहुड में ही आ गए थे अपने, और वहीं अपना पूरा उनकी लाइफ टाइम बीती. और उनके लिए ये दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड. ये विश्व के उनके लिए सबसे सुंदर शहर थे, सबसे सुंदर जगह थे ये. एंड स्टूडेंट ऑफ a student of Bismillah Khan once wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. और एक बार क्या हुआ कि उनका एक स्टूडेंट था और उसने बोला कि आप यूएसए में रहिए, वहाँ के सहनाई इंस्टीट्यूट के हेड बन जाइए, और मैं आपको बिल्कुल बनारस की तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट कर दूँगा, टेम्पल्स बना दूँगा, ये सब कर दूँगा. लेकिन उन्होंने फिर क्या बोला अपने स्टूडेंट को कि क्या आप गंगा जी को भी ले जा सकते हो, गंगा को भी वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो यूएसए में, उसको भी सेट कर सकते हो. एंड दिस इज़ हिज लव फॉर हिज country, his city, and his river Ganga. Later, he is remembered to have said, "That is why, whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan." और उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं जब भी कहीं बाहर होता हूँ, मुझे अपने हिंदुस्तान से इतना प्यार होता है कि बार बार उसी की याद आती है मुझे. While in Mumbai, I think of only Benares. जब मुंबई में होता हूँ तब भी मुझे बनारस की याद आती है. Here, Benaras, Benaras, it is produced in Urdu. It is pronounced. Now it is the Holy Ganga. वो कहते हैं कि जब मैं मुंबई में होता हूँ तो बनारस के बारे में सोचता हूँ और गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में हुआ करता हूँ तो मुझे डुमराव के वो जो अद्भुत मट्ठे होते थे वो याद आते हैं. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kasi Vishwanath temple. And और जो बिस्मिल्लाह खां का जीवन है वो भारत के लिए, एक भारत की संस्कृति के लिए एक बहुत ही अप्रतिम जीवन है. और आप ये भी आश्चर्यचकित होंगे कि बीइंग अ मुस्लिम, ही वॉज अ प्राउड मुस्लिम, बट
every day, every morning he used to play Sahnai in the temple of Vishwanath ji. You think, maybe you can think how it is possible. A Muslim person is every day he starts his morning while with playing Sahnai in the court of in the temple of Kasi Vishwanath. How it is possible? But it is because the person like Bismillah Khan, there he don't have any barrier of religion. He just love for doing the thing of mankind, and he devotes his whole life for the mankind. And he is upper the religion. He is not below the religion. He and his personality is ओवर द रिलीजन्स. वो धर्मों से परे हो गए और उन्होंने अपना प्रत्येक दिन काशी विश्वनाथ टेम्पल में सहनाई बजाने के साथ शुरू किया. बिकॉज वाई एंड दिस इज द resemblance of great Indian culture, great Indian heritage, that सह अस्तित्व, co-living. This is the very heart line of Indian culture, and that the Bismillah Khan is the true picture of that Indian heritage. And this is all about the chapter, and I have discussed all the things, so you will be very easy to handle the exercise. And if any problem there, then ask me in Zoom meetings, and make the PDF of these exercises and send me on the WhatsApp group. I will check your and tell you about your problems or other things. Okay, so this is all, and here is a task for today. Please complete all these tasks on the day it is given. And thanks. This is all for today.